the mesh analysis. Apply mesh analysis, find all branch current in this circuit. There is a 3-loop circuit. You have to find the all branch currents. There are first loop, second loop and 3 loops in this circuit. First loop current assume किया है clockwise, second किया है clockwise, third current भी clockwise assume किया है. अब हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप फर्स्ट. अप्लाइंग KVL इन लूप फर्स्ट में KVL अप्लाई करेंगे तो इंडिविजुअल ब्रांच है 10 ओम, इसमें करंट होगा I1 और सेकंड रेजिस्टेंस कॉमन है फर्स्ट एंड थर्ड लूप में. जब फर्स्ट में KVL अप्लाई करेंगे तो I1 लेफ्ट टू राइट है, I3 राइट टू लेफ्ट है. एल्जेब्रिक सम ऑफ द लूप करंट क्या होगा? I1 माइनस I3. थर्ड में अप्लाई करेंगे KVL तो I3 माइनस I1 और ये रेजिस्टेंस में I1 डाउनवर्ड है, I2 अपवर्ड है. फर्स्ट में KVL अप्लाई कर रहे हैं तो I1 ग्रेटर देन I2 लेंगे और इसमें करंट होगा I1 माइनस I2. जब सेकंड में KVL अप्लाई करेंगे तो करंट लेंगे I2 ग्रेटर देन I1 और करंट होगा I2 माइनस I1. एंड बैटरी साइन लो टू हाई पॉजिटिव. So voltage drop in the first 10 ohm is minus 10 I1. Second 10 ohm current is I1 minus I3 into 10. In the third 10 ohm is current is I1 minus I2 and battery sign is plus 100 is equal to 0. So this is equal to minus 10 I1 minus 10 I1 plus 10 I3 minus 10 I1 plus 10 I2 is equal to minus 100. I1 10 minus 10 minus 10 minus 30 I1 plus 10 I2 plus 10 I3 is equal to minus 100. Equation number 1. Now applying KVL in loop 2. Second loop में KVL apply करेंगे. So current in the this 10 ohm is I2 is left to right, I3 right to left. Applying KVL in second loop I2 minus I3. थर्ड में अप्लाई करते तो I3 minus I2 करंट लेते थे. This 10 ohm current I2 is upward, I1 downward. KVL सेकंड में अप्लाई कर रहे हैं तो I2 ग्रेटर लेंगे और करंट होगा 10 I2 minus I1 10 ohm में. और बैटरी साइन हाई टू लो माइनस. So this is equal to minus 10 into I2 minus I3 minus 10 into I2 minus I1. Battery sign minus 50 is equal to 0. Minus 10 I2 plus 10 I3 minus 10 I2 plus 10 I1 is equal to 50. So 10 I1 minus 20 I2 plus 10 I3 is equal to 50. Equation number 2. Now applying KVL in loop थर्ड में KVL अप्लाई करेंगे तो इंडिविजुअल ब्रांच में करंट I3, ये कॉमन ब्रांच थर्ड और सेकंड में करंट I3 माइनस I2. थर्ड और फर्स्ट में कॉमन रेजिस्टेंस में करंट I3 माइनस I1. सो वोल्टेज ड्रॉप minus 10 I3 minus 10 I3 minus I2 minus 10 I3 minus I1 is equal to 0. Minus 10 I3 minus 10 I3 plus 10 I2 minus 10 I3 plus 10 I1 is equal to 0. So 10 I1 plus 10 I2 minus 30 I3 is equal to 0. इक्वेशन नंबर थर्ड. अभी तीनों भी इक्वेशन में 10 कॉमन आ रहा है तो और इजी बना देंगे हम इसको. 10 कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा 3I1 प्लस I2 प्लस I3 is equal to minus 10. इक्वेशन यू कैन से A. यहाँ भी 10 कॉमन ले लेंगे, इजी करना सॉल्व रहेगा. minus 2I2 plus I3 is equal to 5. थर्ड में 10 कॉमन ले लेंगे I1 plus I2
-3i3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सी। और हम पहले निकालेंगे डेल्टा, फिर डेल्टा I1, डेल्टा I2 एंड डेल्टा I3, या दो करंट निकाल के किसी इक्वेशन में रख देंगे तो थर्ड करंट मिल जाएगा। मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करेंगे। -3 1 1 डिटरमिनेंट मेथड, 1 -2 1 1 1 -3। So this is equal to -3 -2 into -3 -1 into 1 -1 1 into -3 -1 into 1 1 1 into 1 -2 into 1. This is equal to delta now. -3 6 -1 -1 -3 -1 plus 1 1 plus 2 is equal to -3 into 5 -1 into -4 plus 1 into 3 -15 plus 4 plus 3 is equal to -15 plus 7 is equal to -8। यह हमें डेल्टा मिल गया। अब हम निकालेंगे डेल्टा I1। डेल्टा I1 के लिए फर्स्ट कॉलम रिप्लेस बाय राइट हैंड साइड। फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे राइट हैंड साइड वैल्यू से। सेकंड कॉलम थर्ड एज इट इज, दिस रिप्लेस बाय राइट हैंड। राइट हैंड साइड वैल्यूज आर इन A is -10 and 5 and third one is 0. Second and third column as it is, 1 -2 1 1 1 -3. This is equal to -2 -1 -2 into -3 -1 into 1 माइनस प्लस माइनस प्लस लेंगे, ये गए 5 into 1 into 5 into -3 -1 into 0 प्लस 1 into ये लेंगे 5 into 1 -2 into 5 into 1 -2 into 0। this is equal to -10 6 -1 -1 -15 plus 1 into 5 -50 plus 15 plus 5 -50 plus 20 is equal to -10. Now can find the value of I1 by the formula delta I1 is equal to delta I1 upon delta. You can find the value of I1. I1 is equal to delta I1 by delta. Delta I1 is -30 and delta is 8 is equal to -3.75. And now find the delta I2. Delta I2 is equal to first column of delta as it is, second replaced by right hand side value -3 1 1, second column replaced by right hand side value -10 5 and 0 -10 5 and 0, third column as it is 1 1 -3 is equal to -3 5 into -3 0 into 1 minus plus 1 into -3 -1 into 1 plus 1 into 1 into 0 minus 1 into 5. This is equal to -3 -15 plus 10 -3 plus 1 into -5. This is equal to -45 minus 3 or -3 and -1. This is equal to -10 into -4 -5. This is equal to -45 minus plus -40 -5 is equal to 0. So I2 is equal to delta I2 by delta is equal to 0 by 8 is equal to 0. Now substituting the values of I1 and I2 in equation number first.
you can find directly I3. So substituting the value of I2 and I3 in equation number A में रख देंगे. Substitute the value of I1 and I2 in equation 1. We are putting I1 is equal to minus 3.75 and I2 is equal to 0 in equation A. A में रख देंगे. क्या होगा? माइनस 3 इंटू माइनस 3.75 प्लस 0 plus I3 is equal to minus 10. This becomes 11.25 plus I3 is equal to minus 10. So I3 is equal to minus 10 minus 11.25. Delta is minus 8. The value of delta is minus 8. So this is plus 8. Plus this value is plus. So this minus and this becomes plus. So I3 is equal to 1.25 ampere. Now current in first 10 ohm. Current in 10 ohm. First 10 ohm is equal to I1. Is equal to 3.75 ampere. Current in second 10 ohm, I1 minus I3 is equal to 3.75 minus 1.25 is equal to 2.5 ampere. This is first resistance, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth. So ampere direction left to right. This is also left to right. Current in third 10 ohm is equal to I3 minus I2. I3 is greater and I3 value is 1.25 minus 1.25 ampere direction. This I3 के direction में. And current in fourth 10 ohm is equal to I1 minus I2 is equal to 3.75 minus 0, 3.75 ampere down. Current in fifth 10 ohm is equal to I3 1.25 ampere direction is left. So this is the total branch current in this circuit. Now another concept also very important in mesh analysis, in which you have to find the current So next problem of mesh analysis. Find the current in 5 ohm branch by using mesh analysis. Next problem is current in 5 ohm branch. It's a new concept in mesh analysis. You should know this concept also. Otherwise, when applying the KVL or mesh analysis, it becomes difficult to solve such type of problems. So you consider one case of this problem. You have to find the current in 5 ohm branch. Find the current in this resistance 5 ohm. This is 5 ohm resistance. This is 10 ohm resistance. This is 2 ohm. This is 1 ohm. This current is 2 ampere and this is 50 volt source. Same method but slight difference in this type of problems. There are 3 loops. First loop,
this is first, this is second, this is third. So consider the first loop current I1, this is I1, this is I2 and this is I3. Now applying KVL in loop 1, applying KVL in लूप 1, फर्स्ट लूप में करंट केवीएल अप्लाई करेंगे तो 10 ओम में करंट I1 माइनस I2 और ये 5 ओम में I1 माइनस I3, बैटरी साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव लो टू हाई पॉजिटिव, माइनस 10 इंटू I1 माइनस I2 माइनस 5 इंटू I1 माइनस I3, बैटरी साइन 50 इज इक्वल टू 0. तो माइनस 10 I1 प्लस 10 I2 माइनस 5 I1 प्लस 5 I3 माइनस 50. तो माइनस 15 I1 प्लस 10 I2 प्लस 5 I3 इक्वल टू माइनस 50, इक्वेशन नंबर 1. Now applying KVL in the second loop, the current in 2 ohm is I2 and this 10 ohm is I2 minus I1. But you cannot find the current in voltage drop in 2 ohm branch. And when applying KVL in the third loop, also the current in this is I3 and in this branch is I3 minus I1, but we cannot find the current in the 2 ampere branch. So now mesh analysis is not used. In place of mesh, super mesh analysis is used for this type of problem. Apply super mesh analysis. सुपर मैश एनालिसिस में क्या करेंगे, ये दोनों लूप को एक बड़ा लूप बना लेंगे, ग्रेटर लूप, और इसमें ये क्लोज लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे. I2 ऐसे जा रहा है और I3 ऐसे, तो एक इक्वेशन यहां से बन जाएगा I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 2. ग्रेटर की तरफ डायरेक्शन है इसका, तो I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 2 है. ये करंट सोर्स से एक इक्वेशन बन जाएगा और दो बड़े लूप को एक कंबाइंड लूप बना देंगे. इसी को क्या कहेंगे हम, सुपर मैश एनालिसिस. सो 2 ओम में करंट माइनस 2 इंटू I2, 10 ओम में करंट I2 माइनस I1, 1 ओम में करंट माइनस I3, 5 ओम में करंट I3 माइनस I1 इज इक्वल टू 0. तो माइनस 2 I2 माइनस 10 I2 प्लस 10 I1 माइनस I3 माइनस 5 I3 प्लस 5 I1 इज इक्वल टू 0. सो I1 कोफिशिएंट 10 और 5 15 I1, I2 कोफिशिएंट 10 और 2 माइनस 12 I2, I3 कोफिशिएंट माइनस 1 और माइनस 5 माइनस 6 I3 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर, this is equation number. And by solving these equation, find the delta I1 and delta I3 to find the current in 5. So delta is equal to, first में I1 कोफिशिएंट माइनस 15, I2 is 10, I3 is 5. सेकंड में I1 कोफिशिएंट 0, I2 1, I3 minus 1, 0, 1, minus 1. Now the third equation, I1 coefficient 15, I2 is minus 12 and I3 coefficient is minus 6, and we can find the value of I3. This is 15, this is minus 12, this is minus 6. And now solving this, minus 5, 1 into minus 6, minus 1 into minus 12, minus 10, 0 into minus 6, minus 1 into 15, plus 5, 0 into minus 12, 1 into 15. This is equal to minus 15, minus 6, minus 12, minus 10, plus 15, plus 5, minus 15. This is equal to minus 15 into minus 80, minus 150, minus 75.
15 8 जा 120 0 12 15 और 270 15 8 जा 270 minus 225 is equal to 45 is the delta I1, delta value of delta. Now delta I1 replacing the first column by the right hand side value. Right hand side values are minus 50, 2 and 0. Second and third column as it is 5, minus 1, minus 6 is equal to minus 50, 1 into minus 6, minus 1 into minus 12, minus 10, 2 into minus 6, minus 1 into 0, plus 5 into 2 into minus 12, 1 into 0. This is equal to minus 50, minus 6, minus 12, minus 10, minus 12, plus 5, minus 24. This is equal to minus 50 into minus 18 plus 120 minus 120 is equal to 900 is the value of I1. Now you can find the value of I1 by the formula delta I1 upon delta. So I1 is equal to delta I1 upon delta. This is equal to delta I1 is 900 and the value of delta is 45. So this is 20 ampere. I1 value is 20. Now find the value of delta I2, delta I3. First column of delta as it is minus 15 0 15. Second column as it is 10 1 minus 12. Third column replaced by the right hand side value. Right hand side value is minus 50, 2 and 0. You can find the value of delta I3. Delta I3 find out by solving delta I3. 1 into 0, 2 into minus 12, minus 10, 0 minus 2 into 15, minus 50 into 0 into minus 12, 1 into 15. This is equal to minus 15, 24, minus 10 into minus 30, minus 15 to minus 15. This is equal to 360 plus 300 plus 750. This is equal to 690.